Hello viewers, welcome you all to Naik Sir YouTube channel. आपण मानकु समस्तंकु नायक सर यूट्यूब चैनल को स्वागत. टुडे इन एपिसोड 111 we are going to discuss details about must, dare, need, ought to and used to. The modal verbs, other modal verbs I have already discussed in episode 109 and 10, and today in 111 the rest of the modal verbs are discussed here with examples. So let us start with must. Must, what is certain or necessary? We use must with the meaning what is necessary or what is certain. ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଅତି ଜରୁରୀ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ମଷ୍ଟକୁ. ଆଉ ମଷ୍ଟର ପାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଟା ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ହେଇଯାଏ. ଓକେ, ଇନ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମଷ୍ଟ वी यूज had to. Examples: we must speak the truth. I must go now. We must respect our national flag. He had to look after his old parents. He had to look after his old parents. This is the past use of must. Had to look after. Okay. निश्चित अर्थरे बा श्योर एंड सर्टेन अर्थरे नेसेसरी अर्थरे आमे मस्ट को व्यवहार करूँ. देन डेयर. डेयर इज यूज्ड विथ द मीनिंग टू बी ब्रेव एनफ. साहस करिबा अर्थरे विपद को सामना करिबा अर्थरे आमे व्यवहार करिथाउ डेयर को. हाउ डेयर यू से सो. तुमर एभली कहवाक साहस है केमिति? तुम्हें एमती कह केमिति साहस करुच? ही डेयर्स नॉट गो देयर. से सेटा को जिबाकू साहस करू नाही. ही डेयर नॉट गो देयर. ही डज नॉट डेयर टू गो देयर. पिला माने एटी जानी रख, डेयर को जेतेबेले आमे मोडाल भर्ब भाव रे व्यवहार करिबा सेतेबेले आमे मोडाल भर्ब व्यवहार कला बेले आमे टू बसेइबा नाही. किंतु जेतेबेले मेन भर्ब आम व्यवहार करिबा सेतेबेले आमे टू बसेइबा. डाहण पटरे जो वाक्य दुईटी दिया हिची सेठी टू लागिची, किंतु बाम पटरे जो वाक्य दिया हिची हाउ डेयर यू से सो, ही डेयर नॉट गो देयर, एटी टू लगी नहीं, एटी मोडाल भर्ब होइछि. आ सेपटरे मेन भर्ब होइछि टू गो देयर. ही डेयर्स टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर. ओके. नीड. नीड इज यूज्ड विथ द मीनिंग ऑफ नेसेसरी और व्हाट इज नेसेसरी और व्हाट इज डिजायरेबल. आवश्यक बा जरूरी अटे जो गोटाक सही अर्थ रे आमे व्यवहार करू नीड. बोथ डेयर एंड नीड आर सेमी मोडाल्स. बोथ डेयर एंड नीड आर सेमी मोडाल्स. से दुईटा जाक सेमी मोडाल्स अटे. बोथ कैन बी यूज्ड एज मोडाल वर्ब एंड आल्सो इन मेन वर्ब. ताको मेन वर्ब भाव रे एवं मोडाल वर्ब भाव रे आमे व्यवहार करी थाऊ. एग्जाम्पल देखा. दिस कॉफी नीड्स मोर हॉट. ही डज नॉट नीड गो देयर. नीड ही गो देयर. बुझेला. डाहण पटर दिया इन द राइट साइड ही नीड्स टू गो देयर. ही डज नॉट नीड टू गो देयर. Important thing to remember, need when is used as modal verb, टू इज नॉट टू बी यूज्ड. नीड को जेतेबेले आम मोडाल भाव रे व्यवहार करू सेतेबेले टू व्यवहार हुए नाही. बट व्हेन इट इज यूज्ड एज मेन वर्ब
to has to be used or to must be used. आमे जेतले मेन वर्ब भाବରେ व्यवहार करिबा सेतबेले to बसैबाकू बाध्य हेबा. Both need and dare are semi-modals. They can be used as modal verbs and also as main verbs. Okay. Then come to ought to. Ought to is generally used with the meaning should or necessary. Should and ought to are similar in meaning, but ought to is slightly stronger in use. Should एवं ought to दीटाक एका अर्थरे व्यवहार करा जाए, किंतु ought to कहिले आमे टिके अधिक गुरुत्व देई बा अधिक भावरे आमे ता उपरे गुरुत्व दउथिबारु सेतपई आमे ought to व्यवहार करू. एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस. उचित बा आवश्यक अर्थरे आमे प्रयोग करिथाउ ought to. हाउ? She ought to look after her child better. She ought to look after her child better. We ought not to speak loudly to our superiors. This is our moral duty, not to speak loudly to our superiors. So what is moral duty? To do something, we can use ought to in that sentence. Then the last one is used to. Used to is used with past habit. अतीतर नियमित अभ्यासगत भाव करा जाउथिबा कार्यटी आमे जेतेबेले करू व्यवहार करू सेतेबेले यूज्ड टू आमे व्यवहार करू. Used to and would, they are giving the past habit. Both are used in past. I used to get up early. I used to get up early means I used to get up early when I was a child. It was my past habit. I used to get up early. That means nowadays I am not getting up early. Okay. We used to do exercise when we were in hostel. During our hostel staying, we used to do exercise. When we were in hostel, we used to do exercise. That means we are not doing exercise nowadays or these days. So, I think in episode 111, all the modal verbs might have been clearly understood by you all. And if you like next episode 111, 109 and 110 of the modal verb use and in their sentences, their use and the meanings, then you are advised, you are requested to subscribe Naisar channel and also encourage me to do more and more episodes for your strong future. My mission is to spread the knowledge and to make our younger generations stronger. That is written in the downline. सभा तल धाड़ी रे मोर जीवन लक्ष्यटा मु लिखिछि. मो लक्ष्य कण? मो लक्ष्य होछि ज्ञान वितरण करिबा एवं आमर भविष्यत वंशधर मानकु आमे अधिक शक्तिशाली करिबा, अधिक ज्ञानी करिबा, अधिक मजबूत करिबा. थैंक यू ऑल. जय जगन्नाथ.